Hello, good morning, friends. Today is December the 5th, 2023, and in this video, we will broadly focus on Nifty and different sectors. Nifty और its sectors, ये जो है, ये English language, mix of Hindi and English. तो इसमें हम लोग कवर करेंगे क्या हाल है इस सेक्टर्स का, और इसके लिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग में। इसके लिए हम लोग दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे। एक इज वन इज डेली वी विल यूज, अनदर इज शॉर्ट टर्म 125 मिनट्स वी विल यूज। And for that, we will use the rainbow setup, which is I generally use. And I use heavily this one for trading. So I'll go to indicators, invite only, SD Rainbow Wave version 1. And since today we will be doing index, so I'll choose the index setup and keep rest same. I will also need the SD RSI X to create the 12-factor fountain of gold setup. So since this is the default, we will change the strength meter so we can look at the all the different sectors at one go. So let's change it. Let's go to settings, come down नीचे। ये पहला S&P 500 है, इसको हम लोग कर देंगे निफ्टी 500, CNX 500। नेक्स्ट वाला हम लोग कर देंगे सेंसेक्स, या फिर सेंसेक्स का जरूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली गो टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। फिर हम लोग स्मॉल कैप, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज मिड कैप, इसको बनाते हैं फार्मा। नेक्स्ट वाला करेंगे आईटी, 6 नंबर को करेंगे रियल्टी, नंबर 7 को पीएसयू बैंक, नंबर 8 प्राइवेट बैंक, नंबर 9 public sector enterprise. Then we can have energy in number 10. We can have auto number 11, and finally we can have the FMCG. Maximum 12 is possible, so you'll have to use which one जो आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। सो निफ्टी 500 देखिए, ये दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ में क्या चेंज हुआ है कंपेयर टू जो एक दिन, मतलब यस्टरडेज ट्रेडिंग विच इज मंडे। तो हम लोग इसको 2 कर देते हैं, तो फ्राइडेज ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर टू फ्राइडे, ये देखिए निफ्टी का जो 500 उसका स्ट्रेंथ बड़ा है 4.7 पॉइंट। स्मॉल कैप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, 500 देखिए ज्यादा। मिड कैप से 500 बेटर परफॉर्म कर रहा है, सो विल बी केयरफुल इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट। फार्मा इज इन नेगेटिव, राइजिंग स्ट्रेंथ है इसका, बट ये आज ये नेगेटिव है। 2 दिन का जो स्ट्रेंथ पॉइंट्स है उसमें नेगेटिव पॉइंट स्कोर किया है इसने। तो फार्मा सेक्टर जो स्टॉक्स खराब लग रहे हैं, इफ इट्स टर्निंग डाउन यू शुड बी केयरफुल। आईटी इज डेफिनेटली अ वीक, इसका जो स्ट्रेंथ है वो राइज नहीं कर रहा है आईटी का, सो आईटी सेक्टर में रहने से पहले मैं केयरफुल रहूंगा। 4.3 पॉइंट्स इसने स्ट्रेंथ लूज किया है। रियल्टी सेक्टर भी वीक है, ये देखिए आईटी का फॉलिंग हो रहा है, तो फॉलिंग न्यूट्रल करके ये फाइनल जब सिग्निफिकेंटली चला जाएगा नीचे तो फॉलिंग दिखाएगा। इट विल शो फॉलिंग। रियल्टी हैज गॉन अप, बट मेन देखिए दिख रहा है पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी स्ट्रॉन्ग, बट ये हमारा बेंचमार्क ऑफ स्ट्रेंथ है जो निफ्टी 500। तो बीट इसको जो कर रहा है वो है एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। सिंस आईटी थोड़ा वीक है, इसको हटा देते हैं, आईटी को हटा देंगे और फार्मा को। सो नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 4, सो आईटी के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, एमएनसी देख सकते हैं। एमएनसी क्या कर रहा है फार्मा के जगह, और आईटी के जगह देख सकते हैं कैसा कर रहा है मेटल।
मेटल कैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। एमएनसी का स्ट्रेंथ देखिए, जैसा एक्सपेक्टेड ये ज्यादा है, इसीलिए स्मॉल मिड कैप सबसे कम स्ट्रेंथ गेन किया है कंपेयर टू निफ्टी 500। यहाँ पे मेटल में काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, 5.1 स्ट्रेंथ पॉइंट इसने इंक्रीज किया है ओवर द लास्ट 2 डेज। अब चलिए निफ्टी को हम लोग देखेंगे, तो अब इसमें डेली में क्लियरली दिख रहा है बुलिश के हाथ में है, 12 आउट ऑफ द 12 फैक्टर्स जो है बुल के साथ है। और 125 मिनट्स जो शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम है उसमें क्या चल रहा है निफ्टी में, उसमें भी ब्रॉडली बुल्स खड़े हैं, 7 और 5, 12 के 12 फैक्टर्स फायरिंग फॉर द बुल्स। सो ब्रॉडली वी विल रिमेन बुलिश। उसके बाद आ जाते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में 125 मिनट्स में काफी स्ट्रेंथ, बट नॉट एज निफ्टी, क्योंकि देखिए बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी निफ्टी से कम है, 70% है, वेर एज निफ्टी में ज्यादा था बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी 93%। तो पीएसयू बैंक का इसमें बुलिश है ब्रॉडली। डेली में देखते हैं, डेली में इसका जस्ट ब्रेकआउट हो रहा है, सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग है ये सेक्टर, कमबैक चल रहा है ये सेक्टर में, काफी लेट हुआ है कंपेयर टू अदर सेक्टर, बट बीइंग लेट इट इज नाउ फायरिंग, जो बाकी सेक्टर्स नहीं कर पा रहे। फिर चले आते हैं ऑटो में। ऑटो सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, ये अपना आरएसआई सारा फायर कर रहा है, 93% विन प्रोबेबिलिटी। 125 मिनट्स में थोड़ा मोमेंटम लॉस हुआ था यहाँ पे, बट द मोमेंटम इज बैक। आई थिंक और भी मोमेंटम रहेगा, फर्दर इट हैज टू मूव अप। बियर पावर अभी भी मोमेंटम आने का मींस एरिया है, जो मोमेंटम और थोड़ा वापस आ सकता है। Let's look at the MNC sector now. एमएनसी सेक्टर हम लोग ऑलरेडी देखे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज स्टिल गोइंग अप 125 मिनट्स, 93% प्रोजेक्टेड विन प्रोबेबिलिटी। और ये रहा डेली चार्ट में भी ये बुलिश, 93% विन प्रोबेबिलिटी। So metal sector is next. We have seen some strength in the metal sector compared to the last 2 days, 5.1 beating small cap, mid cap as well as Nifty 500. तो ये more of a comeback story है। Buy trade win probability अभी भी low है, long trend is कभी भी bullish होना बाकी है, because the candle देखिए ये long term जो trend line है अपना, this is our long term trend line is passing through these special candles. So the long trend is neutral, neither bullish nor bearish. Further up move very likely, but we will need some comeback in the momentum. Next in the PAC, public sector enterprise, let's look at the metal. Look at the 125 minutes. Have a quick look. There was a slowdown here. Clearly momentum loss, price action is neutral, so this, as we said, momentum has to come back here. So broadly price action is neutral, so you can place an alert key 2358, it's going above, you can look some momentum trade in this sector. Then the price action is still neutral, so you can place an alert, alt A आप alert डाल सकते हैं कि price action जब bullish हो जाए तब आपको बता दें, तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू आपको खबर दे देगा। सो अब जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 125 मिनट्स में देखिए थोड़ा मोमेंटम फ्लैट हो गया, नीचे आरएसआई में दिख रहा है कि मोमेंटम, ये जो क्लाउड का टॉप है इससे टॉप अभी नीचे है, whereas stock this index ऊपर की तरफ जा रहा है, so this is sort of a divergence। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, थोड़ा मोमेंटम लॉस दिख रहा है 125 मिनट्स में, बट ओवरऑल द सेक्टर रिमेन्स फुल्ली बुलिश विद 93% विन प्रोबेबिलिटी इन द डेली टाइम फ्रेम। अब हम लोग जाएंगे आईटी सेक्टर में, जो दिखा रहा है वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर है सिंस द लास्ट 2 डेज। यहाँ पे देखिए रेड कैप दिख रहा है, बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी काफी लो है, 54%, मोमेंटम जा चुका है। आप इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते इमीडिएटली इस सेक्टर में, मोमेंटम डाइवर्जेंस भी है, तो और
करेक्शन की पॉसिबिलिटी, मेन जो सपोर्ट है इस इंडेक्स का इस फ्लैट रीजन, तो इसके नीचे जाने का चांस कम है। और ये जो टॉप है इसको बोलते हैं माउंटेन टॉप, तो ये टॉप पोर्शन से 31,988 to 31,740 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इवन इफ इट starts टर्निंग राउंड। तो कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें? जस्ट गो टू ऑल्ट ए। इसमें आपको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम है नहीं, शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपके साथ, प्राइस एक्शन नहीं है, तो कोई भी एक अलर्ट लगा दीजिए, मोमेंटम का लगा देते हैं, शॉर्ट मोमेंटम बुलिश। जब वो बुलिश हो जाएगा हम लोग को खबर पता चल जाएगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक में आते हैं, और एक बार सॉरी आईटी का एक बार 125 मिनट्स भी देख लेते हैं। 125 मिनट्स में देखिए मोमेंटम पूरा बियर की तरफ फायर कर रहा है, एक सेल का सिग्नल आया है। भले ही ये हम लोग सेल ना ले क्योंकि ये कॉन्ट्रा है, मेन जो ट्रेंड है इट्स अगेंस्ट द मेन ट्रेंड। सो यहाँ पे जो सेल सिग्नल आया है इसका मतलब डेफिनेटली एग्जिट फ्रॉम द रिलेटिवली आईटी पोजीशन, अगर 125 मिनट्स is your trading time frame. If daily is your time frame, still risk reduction तो बनता है with this red cap, it's called red cap. तो अब चले आते हैं प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक्स आर फायरिंग, दे आर इन अ फुल फायरिंग मोड, 93% विन प्रोबेबिलिटी and 125 minute short term swing chart, that is also a very high probability. If you are invested into this, remain invested. So FMCG is the next sector. After a red cap, full green candle, so strength is coming back into this sector. If we look at the FMCG, it has gained 3 points, better than mid cap and small cap. Overall, in this time frame, it is even better than Nifty 500. So this sector is projecting strength. Let's look at the daily time frame. डेली टाइम फ्रेम में 3.4 पॉइंट्स ये गेन किया स्ट्रेंथ में सिंस लास्ट फ्राइडे, एंड दिस इज द बेटर देन द स्मॉल कैप, डेफिनेटली बेटर देन द मिड कैप, and better than some of the sectors as well, but not the top performing sectors. Top looks like it's energy, private bank, PSU bank over the last 2 days. And if I look at the last trading day, means yesterday, compared to yesterday, FMCG is outperforming Nifty 500, small cap, mid cap, and it's outperforming realty, definitely public sector enterprise. But the top performer remains the PSU bank, the private bank, the MNC sector, metal sector, auto sector, and energy sector. All are above the FMCG sector strength. Next, we come to the CNX Finance, Financial Services Index, and this is also in a firing mode, just like banks. We discussed in previous class or videos that this break and test is very, very likely because it is breaking via a slanting zone. That means slanting zone in this long-term trend line. Flat lines are strong support and resistance, but it is breaking via a slanting line. That means strength is preserved, so breakout was very, very likely. Now next is CNX Energy. Super strong energy, it's 1.2 points up, much better than the small cap, mid cap, and Nifty 500. So its energy is broadly strong. CNX Commodities, let's look at the strength meter and bring commodities here. So Nifty 500, let's skip and let's remove one of the PSU banks. Number 7, the PSU bank. We have seen the PSU bank, so let's see if we can bring the commodities. If it's included, I think it should be included.
शायद इंक्लूडेड है नहीं कमोडिटीज, बट इन द नेक्स्ट जो अपडेट होगा इसका, इसमें नेक्स्ट वाला इंक्लूड कर दिया जाएगा कमोडिटीज. बट ब्रॉडली 93% win probability, and in the 125-minute swing chart also very good probability of winning. Strong firing in this sector. Then we have realty in the 125 short-term swing frame. Momentum से दिख रहा है momentum loss. ये रहा red cap का appearance. A drop in the buy trade win probability. तो थोड़ा मोमेंटम लॉस इन द शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम में दिख रहा है. नथिंग सिग्निफिकेंट, ओनली प्राइस एक्शन इज न्यूट्रल. तो इसमें हम लोग एक ध्यान रखने के लिए एक अलर्ट डाल देते हैं, ऑल्ट ए. शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है जब बियरिश हो जाए तो हम लोग को अलर्ट डाल देगा. मोर ओवर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अगर न्यूट्रल, आप उसका भी अलर्ट डाल सकते हैं. देन CNX मेटल सेक्टर. मेटल सेक्टर ये दिख रहा है SDRSIX में एक टर्न अराउंड, एंड नाउ इट्स after a red cap, a full green candle and a breakout. This sector is in broadly a firing mode. In the metal sector, it is up 3.1 point strength, whereas the Nifty 500 small cap, mid cap are much lower performer. The top performer, it is as per this 125 minutes time frame, it is among the top performers. Metal 3.1, PSU bank gain is 3.7, and where auto is 3.2. So auto, PSU bank and metal, these three sectors remain strong in the short term swing frame. And daily, obviously, it's very, very strong in the metal. It's a fresh breakout, and very likely if you are invested in this sector, remain invested. CNX Pharma is, you can see this, it's much weaker, the strength. Buy trade win probability is low. Price action is still neutral. So we can add a price action alert, price action bullish alert, and then be gone. Largely, this sector is seeing some momentum loss. The momentum loss is quite evident in the 125 minutes chart, but after these red caps, a full green candle is appearing. This is good news. 11:30 this candle will close. We can see further comeback if this 16,300 level is getting cleared. 16,280 to 300 एक psychological level होता है. So let's assume it's 16,300. So this level, once it breaks, this sector can gain momentum. So I think that we have covered all the major sectors that are available in the Nifty 500. अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, if it's helping you anyhow, don't forget to subscribe and like. I'll be posting more videos regarding. All the best and happy trading.